Okay, start with the heading of conduction of nerve impulse. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अगर आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया एंड रिपीटिंग आई विल शेयर माय स्क्रीन एट अराउंड 3:20 और 3:25. देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय डिवाइस. तब तक आप लोग क्वेश्चंस लिख रहे हो जो पुराना हमने लास्ट टाइम आपको समझाया था न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन में अगर आपको याद हो विद इन न्यूरॉन जो है कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिकल और बिटवीन टू न्यूरॉन्स इट इज केमिकल. इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स. तो अभी आप लिख रहे हो कंडक्शन या जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. Start with the writing part. When neuron is not conducting, please start with the writing part. When neuron conduction of nerve impulse. When neuron is not conducting any impulse. लास्ट टाइम याद है मैंने बताया था वो कौन सा पोटेंशियल है जब कोई मैसेज नहीं पास हो रहा. एनीवन? Resting potential. Yes, resting. Very good. When neuron is not conducting any impulse, that is resting. The membrane is more permeable to potassium ions. When neuron is not conducting an impulse, that is resting. The membrane is more permeable to potassium ions as compared to sodium ions. The membrane is more permeable to potassium ion as compared to sodium ion. मैम रेस्टिंग के बाद क्या है? हाँ बेटे आपने लिखा है when मैम neuron दैट is not when neuron is not conducting an impulse, that is resting. The membrane is more permeable to potassium ion as compared to sodium ions. जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन इन किया है yes, with those who have joined just now, I'm just dictating the answers. I have some problem with my device. I'll share at around 3:20. तो आप लोग अभी ये जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं लिखो. आप लिख रहे हो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ये अच्छे से समझाया था लास्ट टाइम. यस क्वेश्चन. तो लिख रहे हो आप इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ट्राई टू बी क्विक. टॉपिक्स हमें ज्यादा कंप्लीट करने हैं. Conduction of nerve impulse when a neuron is not conducting any impulse. When neuron is not conducting any impulse, that is resting. When neuron is not conducting any impulse, that is resting. The axon is more permeable to potassium ions. When neuron is not conducting an impulse, that is resting. The axon is more permeable to potassium ions than to sodium ions. रेस्टिंग के बाद कौन सा पोटेंशियल आया था याद होगा? एनआईएफ बताओ. रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद कौन सा था? एक्शन पोटेंशियल. When a next point, because when a stimulus is applied,
when a stimulus is applied on a polarized membrane, when stimulus is applied on a polarized membrane, the membrane becomes freely permeable to sodium ions. वैसे जो भी ज्वाइन इन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन जो आपको डिक्टेट किया जा रहा है. When a stimulus is applied on a polarized membrane, the membrane becomes freely permeable to sodium ions. Ma'am, what is after the membrane becomes? Membrane becomes freely permeable to sodium ions. Ma'am, what is before is applied and when of? Actually, can you repeat? Ma'am, what is when a dash is applied? When a stimulus is applied. What? Sorry? Stimulus. Okay. Stimulus. STIMULUS. Stimulus is applied on a polarized membrane. The membrane becomes freely permeable to sodium ions. This causes reversal of polarity. This causes reversal of polarity. The electric potential difference. The electric potential difference across the plasma membrane Ma'am, what is after the electric potential? the electric potential difference across the plasma membrane is called action potential. Done, everyone? Yes, ma'am. These ionic gradients are maintained the resting membrane. These ionic gradients are maintained across the membrane by active transport of ions By active transport of ions by sodium potassium pump. Which transport 3 sodiums outward sodium outward and 2 potassium inward. Which I am repeating for everyone. कुशल सुनो बेटे दोबारा से. हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड.
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको आपको लिखवाया है लास्ट टाइम, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आप सबको आता है। न्यूरॉन में जो कंडक्शन है दैट इज इलेक्ट्रिकल, बिटवीन टू न्यूरॉन्स इट इज केमिकल। तो अभी हम विद इन न्यूरॉन पढ़ रहे हैं कैसे जनरेट होता है इम्पल्स। इसके लिए आपको जो लिखवाया है, रिपीटिंग। Those who are done with the writing part can make the diagram from page 318 from your NCERT. 318 में बना हुआ diagram. I'll repeat this diagram at around 320 by sharing my screen. Till then you can make the diagram from 318 page of your NCERT. और जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो. I'm repeating everything. When a neuron is not conducting any impulse, that is resting potential, the membrane is comparatively more permeable to potassium ion as compared to sodium ion. When neuron is not conducting any impulse, that is resting potential, the membrane is more permeable to potassium ion as compared to sodium ion. When a stimulus is generated, a stimulus is applied, the membrane becomes freely permeable to sodium ions. This causes the reversal of polarity. The electric potential difference across the membrane is called action potential. The ionic gradient across the resting potential are maintained by active transport of ions by sodium-potassium pump. You have to make the diagram from page number 318. इसमें आपको दिख रहा है सोडियम आयंस पहले मूव कर रहे हैं ए साइड में, सोडियम आयंस they are moving inside and potassium they are moving outside. Polarity is reversed. फिर उसके बाद ए से बी साइड में वो polarity हो रही है, इसको बोलते हैं जो हमारी नॉर्मल स्टेट है उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। जो पोलराइज स्टेट खराब हो जाती है उसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड, वापस आती है उसको क्या बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को रेस्टिंग पोटेंशियल की बताई थी -70 मिलीवोल्ट, एक्शन पोटेंशियल की है +40 मिलीवोल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स आपका शुरू है साइनैप्स। हेडिंग लिखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसमें अपने 318 से बना लिए सभी ने डायग्राम। लिखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, हेडिंग लिखो इसमें साइनैप्स। It occurs in इट occurs in synapse। आपने लिखना बच्चे, हेडिंग लिखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिर आप लिखोगे उसमें साइनैप्स की डेफिनेशन, गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनैप्स क्या होता है? गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। Ma'am, gap junction between टू न्यूरॉन्स। It consists of presynaptic membrane. It consists of presynaptic membrane,
synaptic cleft, and postsynaptic membrane. It consists of presynaptic membrane, synaptic cleft, and postsynaptic membrane. Ma'am, please repeat from it consist. It consists of presynaptic membrane, synaptic membrane, and postsynaptic cleft. Presynaptic membrane, synaptic cleft, and postsynaptic membrane. Please repeat. Next, Nico. It consists of presynaptic membrane, synaptic cleft, and postsynaptic membrane. Next, Nico. There are two types of synapses, electrical and chemical. There are two types of synapses, electrical and chemical. हेडिंग लिखो केमिकल साइनैप्स आप लोगों को समझाया हुआ ऑलरेडी केमिकल साइनैप्स के बारे में लिखो केमिकल साइनैप्स में लिखो न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरो NURO neurotransmitters NUROTRANS MITTERS neurotransmitters are involved in the transmission of impulse. In this, neurotransmitters are involved in the transmission of impulse. When impulse arrives at axon, when impulse arrives at axon, it stimulates movement of vesicle. When impulse arrives at axon, it stimulates movement of vesicle towards the membrane. Vesicle. Towards the membrane. Ma'am, Ma'am, it's movement. Ma'am, I'm movement repeating. of के बाद. When an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates movement of vesicle towards the membrane. It releases neurotransmitter. It releases neurotransmitter Ma'am, towards के बाद क्या था? towards the membrane. It releases neurotransmitter in the synaptic cleft. in the Synaptic cleft. In the synaptic cleft, SYNAPTIC synaptic cleft, they release neurotransmitter. They release neurotransmitter, binds to receptor,
The release neurotransmitter binds to the receptor. The release neurotransmitter binds to the receptor present on the postsynaptic membrane. The release neurotransmitter bind to specific receptor on the postsynaptic membrane. मैम न्यूरोट्रांसमीटर के बाद क्या है? Binds to the specific receptor present on the postsynaptic membrane. Write down next heading, central nervous system. मैम क्लास के बाद नोट भेज दोगे ये? हाँ बच्चे किसी को बोलना पड़ेगा, कोई जो अच्छे नोट्स किसी के बन रहे हैं तो प्लीज शेयर इन द ग्रुप. हमारे बीच में आवाज क्लियर नहीं आ रही. हाँ हाँ कोई बात नहीं बच्चा. लास्ट समवन किसके कंप्लीट हो रहे हैं नोट्स? प्लीज रेज योर हैंड. If anyone in the group can share it in the group also. बच्चे please raise your hand. Okay, ठीक है बेटे. जिसकी राइटिंग क्लियर है देख लेना बेटे. Okay, please do it after the class. Write down heading central nervous system. Okay, thank you. Divyanka, Ruqayya, Kritika, Paramveer. Central nervous system में लिखो. हेडिंग लिखो ह्यूमन ब्रेन. ब्रेन बॉक्स को हमने क्या नाम दिया था? मैम क्रेनियम. क्रेनियम. जो स्कल है हमारा उसको बोलते हैं क्रेनियम. और उसमें कितने मेनिंजेस थी, कितनी लेयर्स थी? 3 layers. 3 layers. वेरी गुड वेरी गुड. लिखो इसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में लिखो. इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल. It is well protected by skull. Inside the skull, brain is covered with cranial meninges. It is well protected by skull. Inside the skull, brain is protected by cranial meninges, meninges. Brain is covered by cranial meninges consisting of dura mater, DURA, dura mater. याद होगा बताया था मैंने तब आपको. Dura mater, DURA, MATER, dura mater, comma arachnoid, 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 arachnoid. Dura mater, arachnoid, and pia mater, PIA, MATER. Please repeat. Pia mater, PIA, MATER. Dura mater, arachnoid, pia mater. कितने हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन? 3. 3. 3. Ma'am 3. Brain mid brain. Yes. लिखो बच्चे सबसे पहले. Brain is divided into 3 parts. पहला लिखो forebrain, FORE, BRAIN.
फोरब्रेन में मैक्सिमम पार्ट किसने लिया हुआ है? सेरिब्रम। सेरिब्रम याद होगा, मैंने बताया था मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। तो फोरब्रेन हेडिंग लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फोरब्रेन में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, CEREBRUM, comma thalamus, THALAMUS, and hypothalamus. थैलेमस वही है जो हमारे पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ब्रेन हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आपको याद होगा मैंने बताया था। इट इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यस। cerebrum divides cerebrum is divided into two. Cerebrum is divided into two halves. Cerebrum is divided into two halves, which is called as cerebral hemisphere. Ma'am, can you repeat? Which is cerebrum is divided into two halves, called as cerebral hemisphere. The hemispheres are connected by the hemispheres are connected by corpus callosum. CORPUS CALLOSUM. CORPUS CALLOSUM. सेरिब्रम के फंक्शंस लिखो। पहले आप सेरिब्रम से पहले ये लिखो, another important part of brain, called hypothalamus. Another important part of brain called hypothalamus lies at the base of thalamus. It controls body temperature,
मैम आर यू वेल? हाँ जी बच्चे, क्या कह रहे हो? मैम आप ठीक हो? हाँ। Another important part of brain called hypothalamus lies at the base of thalamus. It controls body temperature, urge for eating and drinking. मैम बॉडी टेम्परेचर के बाद Urge for drinking and eating. Urge for eating and drinking. Next part लिखो midbrain. Ma'am, functions of cerebrum. Oh yes, functions of cerebrum. ऊपर वाले पार्ट में ये भी मिड ब्रेन मत लिखना, उससे पहले ही लिखो. Cerebrum controls our memory. Cerebrum controls our memory, communication skills, thinking and intelligence. नेक्स्ट मिड ब्रेन में आप लिखो मिड ब्रेन में canal called मिड ब्रेन में a canal called cerebral aqueduct, cerebral, cerebral aqueduct, aqueduct. Canal called cerebral aqueduct passes through midbrain. मैम कैन यू रिपीट? Okay, midbrain में लिख रहे हो बेटे, a canal called cerebral aqueduct passes through midbrain. What is after aqueduct? Cerebral aqueduct passes through midbrain. It consists of four lobes called. It consists of four lobes called. A canal called cerebral aqueduct passes through midbrain. It consists of four lobes called corpora quadrigemina. CORPORA, corpora quadrigemina. QUADRIGEMINA. Corpora. Quadrigemina. QUADRIGEMINA. Next part is hindbrain. Hindbrain में तीन parts थे, याद है किसी को? It comprises of, yes, And medulla. yes, pons, Cerebellum and medulla. very good. Yes, pons, cerebellum and medulla. It consists of pons, cerebellum, medulla.
Medulla, pons joint, they control our involuntary action. Because pons and medulla, PONS, pons and medulla, regulate involuntary actions. In cerebellum, controls the balancing. Cerebellum controls the balancing and posture of the body. Cerebellum controls the balancing and posture of the body. मैम involuntary actions के बाद Controls involuntary action. Cerebellum controls the posture and balancing of the body. Cerebellum controls the balancing and posture of the body. Last topic, लिखो reflex action. Reflex action, लिखो. It is quick, automatic. It is quick, automatic, spontaneous response to a stimulus. It is quick, automatic, spontaneous response to a stimulus without involving the will of organism. मैम what is after without involving The will, WILL. Without involving the will of organism. It is quick, automatic, spontaneous response to a stimulus without involving the will of organism. Next heading, लिखो reflex arc. Ma'am, just a second. Okay. Reflex arc में लिखो the path followed during reflex section. The path followed during reflex action is called as reflex arc. Continued है. The path followed during reflex action constitute reflex arc. The afferent nerve, AFFERENT, the afferent nerve receives signal from sensory organ. The afferent nerve receives signal from sensory organ. The afferent nerve receives signal from sensory organ and transmit the impulse via dorsal
transmit the impulse via dorsal nerve to central nervous system. Please repeat. The dorsal nerve into the central nervous system. Transmit impulse from dorsal nerve to central nervous system. The efferent nerve, then carries signal from central nervous system to effector. Ma'am, what is after central nervous system too? Effector. EFFECTOR. So please draw this diagram from page number 322. Ma'am, please repeat from efferent nerve. Efferent nerve then carries signal from CNS to effector. Draw the diagram of reflex action or reflex arc from page number 322, everyone. Would you please draw this diagram quickly, and when you are done, just raise your hand. Then I'll Ma'am. start with yes. Ma'am, is it effective or effector? Effector. EFFECTOR. Okay, जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं, I'm just giving a quick revision. आप लोगों ने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था. I hope everyone can see my screen now. Yes, ma'am. Okay. तो बच्चे हमने ये स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का. न्यूरॉन में अगर आपको याद हो, दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी या साइटोन, और नीचे वाला पार्ट होता है एक्सॉन. साइटोन का दूसरा
सेल बॉडी। साइटोन का दूसरा नाम है सेल बॉडी। जो वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके। इसमें आती है माइलिन शीट। जहां माइलिन शीट एब्सेंट है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीयर। ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो टॉपिक। ये आती है नर्व एंडिंग्स। यहाँ जो नर्व एंडिंग्स हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे आता है न्यूक्लियस और बेसल ग्रैन्यूल्स। दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है वाया जंक्शन कॉल्ड एज साइनेप्स। विद इन द न्यूरॉन कंडक्शन कैसी है? इलेक्ट्रिकल। बिटवीन टू न्यूरॉन्स कैसी होती है? केमिकल। और केमिकल जो होते हैं उनको नाम क्या दिया गया था? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से थे? एड्रेनालिन एंड Acetylcholine. एसिटाइलकोलिन। एड्रेनालिन इज इमरजेंसी हार्मोन एंड एसिटाइलकोलिन जो हम नॉर्मली हमारी बॉडी में रहता है। एसिटाइलकोलिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगी, अगर आप लोगों को याद हो नेक्स्ट में हम अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज, इनर मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। आउटर में क्या प्रेजेंट है? ज्यादा सोडियम आयंस। और अंदर क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम आयंस। तो ये हमारी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा? रेस्टिंग पोटेंशियल में there is more positive charge outside as compared to inside. inner में positive ions है, more positive 3 sodium ions outside होते हैं, 2 potassium ion inside, which makes the membrane electrically potential, creates an electric potential across the membrane. ये आता है रेस्टिंग। जब कभी अभी रेस्टिंग स्टेज में फिर आता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -70 से 40 या 50 मिली वोल्ट होगी। Then it generates an impulse, and this minimum value is called as threshold potential. Threshold potential इसका क्या मतलब हुआ कि minimum potential required to generate an impulse. तो threshold value should be this one. अगर इससे less है तो action नहीं होगा। Action में क्या होता है? polarity is reversed, जिसमें हमारे sodium ions permeable हो जाते हैं अंदर की तरफ और potassium ions जो है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। This causes the reversibility of the membrane. बाहर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, अंदर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दिस क्रिएट्स ये स्टेट जो थी, जो हमारी नॉर्मल स्टेट होती है रेस्टिंग पोटेंशियल, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड स्टेट खराब हो गई, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। फिर दोबारा ये मेम्ब्रेन वापस अपनी स्टेट में आने की कोशिश करती है और अपनी स्टेट में आने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आपको याद हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, दे विल नॉट मूव ऑन देयर ओन, तो इनको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, they forcefully push sodium ions to the outer side and potassium ions to the inner side. Again reversibility is assumed, resumed। पॉजिटिव बाहर आ जाते हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज repolarized state. तो depolarized, polarized, depolarized and repolarized state. Repolarized state में क्या होता है? membrane is repolarized again back to its normal state. तो आई थिंक ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स सबको क्लियर हो गया। यस, अच्छा क्लियर है सभी को? मैम दोबारा बता दो। Okay, I'll repeat again.
अच्छा, मैंने आपको बोला कि नॉर्मली हमारी जो मेम्ब्रेन है बाहर होती है नेगेटिव, नॉर्मल जो है हमारी मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव होती है, अंदर नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल इसलिए बिकॉज ये रेस्टिंग स्टेट पे है, नॉर्मल स्टेट में है, बाहर सोडियम है, अंदर पोटेशियम है। बाहर 3 सोडियम होते हैं और अंदर 2 पोटेशियम। ये हमारी नॉर्मल स्टेट है। जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल आता है जिसकी वैल्यू है 40 मिलीवोल्ट, मिनिमम वैल्यू है विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे ही वैल्यू आती है तो पोलराइज स्टेट खराब हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइज स्टेट। इसमें नेगेटिव बाहर आ जाएंगे, पॉजिटिव अंदर आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो पहले रेस्टिंग था, फिर एक्शन हो गया, फिर उसी के साथ दूसरी स्टेज में क्या होगा, वापस स्टेट आने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दोबारा एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर सोडियम एंड पोटेशियम मूवमेंट, इसीलिए इसको बोल दिया सोडियम पोटेशियम पंप। पंप इसलिए बिकॉज वी आर मूविंग फोर्सफुली, तो बाहर फोर्सफुली सोडियम को बाहर फेंका जाता है, पोटेशियम को अंदर, तो दिस कॉजेज रिवर्सिबिलिटी। तो पहले स्टेट थी पोलराइज, फिर आई डीपोलराइज, फिर आई रीपोलराइज, तो 3 स्टेट्स आई। अब क्लियर है बच्चों? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, फिर उसके बाद आता है केमिकल। जैसे ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है, जैसे ये केमिकल अगर आप देख रहे हो, ये अगर केमिकल यहाँ से यहाँ आ गया नीचे बीच में रिलीज हुआ, this chemical when it enters through the synapse stage, साइनैप्स क्या है, ये नर्व एंडिंग है, ये दूसरे नर्व का डेंड्राइट है, दोनों के बीच में गैप को बोला जाता है साइनैप्स। आप लोगों ने अभी लिखा कि साइनैप्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में केमिकल आता है, यहाँ पे वेसिकल्स में पड़ा होता है, मेम्ब्रेन में पड़ा होगा, ये ऐसे केमिकल पड़ा होता है, ये केमिकल है, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही ये टच करता है मेम्ब्रेन को, इट रिलीजेस दीज केमिकल्स टू द आउटर साइड, और यहाँ पे वो मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पड़े हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था एसिटाइल कोलिन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है, किसमें तोड़ेगा, एसिटाइल एंड कोलिन, और एंजाइम का नाम बताया था, इसके बाद पड़ेगा कोलिनेस्ट्रेज। तो कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है, जो कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है ब्रेक्स एसिटाइल कोलिन इनटू एसिटाइल एंड कोलिन। जैसे ही कोलिन फॉर्म होता है, ये वेसिकल्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं दूसरी मेम्ब्रेन पे, these membranes they receive these chemicals, and this is how chemical is transferred from one membrane to another membrane via synapse. तो ये वाला जो इम्पल्स हुआ, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल साइनैप्स। तो साइनैप्स आपने 2 तरह के पढ़े हैं, एक न्यूरल साइनैप या इलेक्ट्रिकल साइनैप, दूसरा आपने पढ़ा केमिकल। तो केमिकल साइनैप्स आपके सामने, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स ये होता है इलेक्ट्रिकली जो मूव हुआ। अंशुमन क्लियर है बेटे? ये ज्वाइनिंग ले सभी को समझ आ रहा है बेटे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके। और फिर अभी हमने पढ़ा नेक्स्ट पार्ट, जो आप लोगों ने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन में आपने पढ़ा आउटरमोस्ट जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज स्कल। स्कल बोला या फिर आपने बोला क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है दैट इज आल्सो अगेन इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, 3 लेयर्स हैं व्हिच आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, रेकनॉइड
and pia matter. Dura matter, arachnoid and pia matter. These are 3 layers. 3 layers या इनको एक और नाम दिया जाता है meninges. Brain is divided into 3 parts. पहला वाला front part आता है forebrain, then midbrain और last part आता है hindbrain. तो maximum part of forebrain is covered by cerebrum. और मिड ब्रेन में 3 पार्ट्स आप लोग पढ़ चुके हो. मिड ब्रेन जनरली इट कैरीज पैसेज. इसमें सिर्फ एक पैसेज बोलते हैं जो पास करता है, जिसको बोला गया है सेरिब्रल एक्विडक्ट. मैंने लिखवाया आप लोगों को एक्विडक्ट. फोर ब्रेन में था हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम. सेरिब्रम के पार्ट्स आप लोग पढ़ चुके हो. इट हेल्प्स, इट कंट्रोल्स मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशंस. Hypothalamus जो है it is again a very important part because it controls our drinking or eating. जो satiety है, eating जो आपके और drinking patterns है, it is controlled by hypothalamus. Urge, even our body temperature is controlled by hypothalamus. फिर उसके बाद आता है aqueduct. ये सिर्फ passage है. Corpus callosum जिसको बोला जाता है, दो canal है which joins to cerebral. फिर उसके बाद hindbrain. hindbrain में आपने 3 parts बताए थे. कौन से थे? एक तो pons एंड आई गेस ये ब्रेन का पार्ट भी सभी को क्लियर है. आपको अच्छे से लिखवा भी दिया मैंने. आज ये कंप्लीट हो गया पार्ट. फिर इसके बाद लास्ट पार्ट जो आप लोगों ने किया दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में बताया मैंने आपको कि इट इज क्विक ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स. समझा पहले ही दिया था कि क्या क्यों बोला गया इसको क्विक. बिकॉज बिना सोचे समझे किया जाता है. ऑटोमेटिक अपने आप. स्पॉन्टेनियस एकदम से, विदाउट इन्वॉल्विंग द विल ऑफ ऑर्गेनिज्म. बिना सोचे समझे जो नर्व लेके जाती है, याद होगा बताया था दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी. लेकिन मैंने जो आप लोगों को लिखवाया है दैट इज एफरेंट नर्व. एफरेंट नर्व जो है वो कैरी करेगी मैसेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज योर ब्रेन, बट इस केस में हम ब्रेन के बजाय यूज कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड. बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हिस्सा थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो नर्व लेके आ रही है इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व. बीच में आ जाती है इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन, या फिर इसको नाम देते हैं मिक्स्ड नर्व. इसको रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है या मिक्स्ड नर्व भी बोला जाता है. आपने डायग्राम जरूर बनाना है. आई गेस सबने बना लिया. और फिर ये मसल्स को लेके जाता है. वो जो मसल्स को लेके जाती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व. So as it is in the form of arc, this is called as reflex arc. I hope everyone is clear. और मोटर नर्व का नाम जो आप लोगों को लिखवाया है वो है इफरेंट. इफरेंट नर्व लेके आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और इफरेंट नर्व जो है वो लेके जा रही है. दिस इज हाउ मैसेज इज कन्वेड. तो वी आर डन विद दिस चैप्टर. मुझे हमारा ह्यूमन फिजियो का आई थिंक अभी एक ही चैप्टर रह गया. एक एक्सक्रीटरी रह गया एंड लोकोमोशन. 2 चैप्टर्स है. Okay, I'll start with the next excretory system in the next class. Please do not miss your classes, bache, because I'm trying to finish syllabus as soon as I can. Bache, baki, if you have any doubt or even if your exams are coming or your date sheet is there, just share it with me. Okay? So, मैम ये वाला एक बार दोबारा समझा दो. कौन सा वाला पार्ट